Namaste, dear readers. Today we will be chanting the Durga Dvatrimshan Namamala Stotram. It is a hymn made of 32 names of Goddess Durga, and this hymn is very protective in nature. It gives us strength, protection and guidance. Durga, Durgarti Shamani, Durga Padvinivarini, Durga Machedini, Durga Sadhini, दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमाता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गधारिणी नामावलीमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः शत्रुभिः पीड्यमानो वा दुर्गबन्धगतोऽपि वा द्वात्रिंशन्नामपाठेन मुच्यते नात्र संशयः. Goddess Durga herself says, whoever recites this series of names, Namavalim Imam, Yastu Durgaya Mama, my names, Manavaha, any human who recites this, Patet, Sarva Bhayan Mukto Bhavishyati, Na Samshayaha, that human will be freed from all kinds of fears. Certainly, when someone is tormented by enemies, Shatrubhih Pidyamanaha, Va or Durga Bandhagatopiva, or he is chained with chains or arrested in fort. By chanting these 32 names, Dvatrimshan Nama Patena Muchyate, that person is liberated. Natra Samshayaha, there is no doubt in this matter.